Welcome back to Make Mechatronics. In the last lecture, okay, we saw 555 circuit with the A-stable circuit. Okay, हम लोग ने उसके बारे में पढ़ा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, सर्किट के बारे में देखा, उसका वर्किंग देखा, उसमें सर्किट बनाया. And today is the first lecture and the second lecture of the series and the first lecture for the Arduino. ओके सो ऑल्दो आर्डिनो का मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था पहले, बहुत पहले. सो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. एंड जस्ट फॉर द फास्ट क्विक रिकैप, एक बार फिर से आर्डिनो को रिकैप करेंगे हम लोग. एंड बेसिक कमांड से आज स्टार्ट करेंगे. टिल एनालॉग रीड वी विल डू. ओके, फोर बेसिक कमांड्स: digital write, digital read, analog write and analog read. Analog write maybe we will do afterwards, analog read we will do. Three basic commands. Okay, so let's start with our series. I hope everything is visible to you. Yeah, it is. So let's start. I've made this basic circuit. Okay, for those of you who don't know what Arduino is, okay, you can either watch an introductory session of mine or some other person on the YouTube. Although Arduino is a microcontroller, okay, it is basically a device in which we have many pins, input output pins, okay, and in which we write some piece of code, computer program, and then we put that program into the Arduino using this USB cable. You can see here, using this USB cable we put that program into the Arduino, and then Arduino execute that code and work accordingly. एंड वर्क अकॉर्डिंगली मीन्स जो भी इनपुट लेना होता है वो इनपुट लेता है, उसके ऊपर जो मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करने होते हैं वो अप्लाई करता है, एंड जो आउटपुट देना होता है वो आउटपुट देता है. नाउ जो इनपुट लेना होता है इनपुट लेता है, जो आउटपुट देना आउटपुट देता है. हाउ? बिकॉज many of you know programming languages, so you have seen that when we write print hello world in C, okay, so in Python we write print and then we write hello world. So in the down output console we can see hello world. So what kind of output does Arduino gives, right? That's the question. So using these input output pins, so first I would introduce you to the input output pins, also called as GPIO, general purpose input output pins. Okay, they start from D0 onward to D13. Then we have the analog input pins A0, A1, A2, A4, A5, and then these are power pins: V in, ground, 5 volt, 3.3 volts, ground here once again. So let's talk about the inputs and outputs of Arduino. So Arduino is capable of handling digital as well as analog inputs. Okay, so what is digital? Digital means 0 or 1. Okay, so either we can give Arduino a 0 signal or a 1 signal. Okay, 0 means 5 volt and 0 means 0 volts and 1 means 5 volt signal. So either Arduino can read 0 volt or 5 volt, or read a 0 or 1. Okay, we can give the signal using a switch, okay, a push button, or we can use any other sliders or anything, sensors maybe. And Arduino can give output, digital output, as 0 or 1. 0 or 1 means it can switch on something and it can switch off something. Okay, like the LED we have attached here to the pin number 7. So if I write a code here saying to Arduino that switch on the pin number 7 and then switch it off after 1 second. So LED will be on for 1 second and then off for 1 second, like that. Okay, so that was about the digital input output. Okay, and Arduino is also capable of doing analog input and analog output. Now analog means variable voltage, in between voltages from 0 to 5. So how does Arduino read it? Okay, Arduino has a module called ADC, analog to digital converter. Now Arduino cannot read analog, pure analog nobody can read, okay, because pure analog means that we are able to read each and every value between 0 and 5 volt, which are infinite, right? There are infinite values between 0 and 5 volts. So that much, that is the most efficient thing. Okay, and we don't have that right now. So Arduino can do up to 1024 levels. That means Arduino has a ADC of 10 bit. Okay, these might be some, these are some technical terms, so a lot of you guys are confused maybe.
सो डोंट गेट कंफ्यूज, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। 10 बिट आर्डिनो 10 बिट एडीसी का मतलब होता है कि जो समझ लो कि अभी एक एनालॉग पिन है, एनालॉग पिन जो A0 से A5 तक है, उसमें मैंने एक सेंसर का जो आउटपुट आ रहा है वो दिया आर्डिनो को। तो आर्डिनो क्या करेगा, वो आउटपुट किसके किसके बीच में होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 and 5 वोल्ट के बीच में होगा। आर्डिनो क्या करेगा, उस 0 and 5 वोल्ट्स को 1024 लेवल्स में डिवाइड करेगा। ओके, सो वॉट एवर दैट इज, एंड देन इफ सपोज मेरा आर्डिनो जो है वो 5 लेवल्स में डिवाइड करता है, तो क्या होता, अगर 0 से 1 के बीच में वोल्टेज है तो वो 0 दिखाता, अगर 1 से 2 के बीच में वोल्टेज है तो वो 1 दिखाता, अगर 2 से 3 के बीच में वोल्टेज है तो वो 2 दिखाता, अगर 3 से 4 के बीच में वोल्टेज है तो 3 दिखाता, 4 से 5 के बीच में तो 4 दिखाता, एंड 5 है तो 5 दिखाता, राइट। अगर 5 लेवल्स में डिवाइड करता मेरे वोल्टेजेस को तो ऐसा होता, बट आर्डिनो उसको 1024 लेवल्स में डिवाइड करता है। मतलब आर्डिनो की सेंसिटिविटी, मतलब अगर समझ लो 0.5 वोल्ट है तो उसके लिए एक अलग वैल्यू डिस्प्ले होगी, 0.25 वोल्ट है तो उसके लिए एक अलग वैल्यू डिस्प्ले होगी। सो लाइक दिस वी कैन सी दैट द सेंसर लाइक वी कैन हम लोग देख सकते हैं कि सेंसर की कितनी वैल्यू आ रही है इन 1024 लेवल्स। सिमिलरली एनालॉग जो आउटपुट है दैट हैज़ 255 लेवल्स। मतलब हम लोग 5 वोल्ट्स को 255 लेवल्स में डिवाइड कर दो, उतने हम लोग स्टेप्स दे सकते हैं, आर्डिनो आउटपुट दे सकते हैं। ओके, वो कैसे देते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, एनालॉग आउटपुट वी आर नॉट गोइंग टू डू टुडे, जस्ट एनालॉग इनपुट्स। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज। ओके, सो एनालॉग आर्डिनो कैन डू, आई होप इट इज विजिबल राइट, so Arduino can do digital inputs, digital outputs and analog outputs and analog inputs also. Okay, digital inputs कैसे देता है Arduino, 0 and 1, 0 या 1 रीड करता है, 0 या 1 आउटपुट दे सकता है। एनालॉग आउटपुट कैसे देता है, 255 लेवल्स में देता है। मतलब इधर सपोज आई वांट टू गिव माय एलईडी अराउंड 2.5 वोल्ट्स ओनली, सो मैं क्या दूंगा, मैं 255 का हाफ, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली 128, राइट। सो मैं 128 दे दूंगा उसको वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू कैसे देते हैं, ये क्या है 128, ये सब हम जब कोडिंग करते वक्त तब देखेंगे। ओके, सो क्विकली, ओके, एंड वन मोर पॉइंट, जो ये तो आपको ये दिख रहे हैं कुछ कुछ पिन्स के आगे डैश बना हुआ है। ओके, सो अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो ये डैश नहीं है एक्चुअली, ये एक कर्व स्विगली है। सो इस स्विगली का मतलब होता है कि ये पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 and 11, these are the pins who are capable of doing analog output. Other pins are not capable of doing analog outputs. Okay, so अगर हम लोग को एनालॉग आउटपुट करना है तो हमें यही पिन को यूज़ करना पड़ेगा। बाकी all of the pins can do and digital output and all of the pins can do digital input. This pin can do analog input. Okay, that's for the Arduino board. Okay, this is the power supply of the Arduino. Okay, from here we attach the external power supply if needed. This is the reset button. Okay, just restart the Arduino. And one more doubt that many of you have, that अगर हम लोगों ने कोड को अपलोड किया आर्डिनो के अंदर एंड फिर उसको पावर निकाल दिया, रीस्टार्ट कर दिया, तो कोड हट जाता है कि नहीं। आर्डिनो के अंदर जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, फ्लैश मेमोरी, जिसके अंदर एक बार अगर कोड चला गया तो जब तक हम लोग इरेज नहीं करते उस कोड को या फिर दूसरा कोड अपलोड नहीं करते हैं, तब तक वही कोड आर्डिनो के अंदर रहता है, वही कोड चलता रहता है। ओके, सो दैट्स सेटल्ड। सो नाउ लेट्स सी द कोड। Okay, so this is a basic code, okay, for LED blinking। और हम लोगों ने LED blinking 555 में भी की थी, right, 555 में भी की थी। I hope the code is visible to you guys। okay, so हम लोगों ने LED blinking 555 टाइमर IC में भी की थी। हम लोगों ने उसको LED को ब्लिंक कराया था, हम लोगों ने कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ किया था ताकि LED जो ब्लिंकिंग का जो रेट है वो कम ज़्यादा हो जाए, राइट। and also we discussed and also I asked you a question that R1 and R2 में कौन से R1 या R2 कौन से में हम लोग वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे ताकि हम लोग उसका स्पीड कंट्रोल कर सके, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सके 555 टाइमर की। ओके, सो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ कि हम लोग R2 में लगाएंगे वो वेरिएबल रजिस्टर, बिकॉज वाइल चार्जिंग R1 and R2 बोथ प्लेज अ रोल एंड वाइल डिस्चार्जिंग R2 प्लेज अ रोल। तो अगर हम लोग R2 में लगाएंगे तो हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के टाइम, मतलब दोनों का जो टाइम है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम लोग हाई टाइम और लो टाइम बोथ टाइम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ R1 में वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं तो हम लोग सिर्फ उसका ऑन टाइम कंट्रोल कर पाएंगे, ऑफ टाइम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए वी विल अटैच द वेरिएबल रजिस्टर इनटू R2। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर कोड. So let's ignore this two lines for a minute. So Arduino coding structure, basic Arduino coding structure is comprises of two modules. This is the first module called void setup and this is the second module called void loop. अब कैसे, अब बात ये है कि सी लैंग्वेज जो हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं, कंप्यूटर के जो सीखते हैं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर कोड होता है, ओके वो कोड रन होता है, आउटपुट आता है, राइट। वो कोड जब कम्प्लीटली रन हो जाता है तब हमें आउटपुट दिखता है, इज़न्ट इट। बट अगर आर्डिनो में वैसा हो तो काम चलेगा क्या? मतलब अगर मैंने समझो एक सिस्टम बनाया है विच इज़ सपोज टू टेक द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड कंट्रोल द फैन स्पीड अकॉर्डिंग टू दैट, तो क्या होगा, एक मैंने कोड लिखा है, टेम्परेचर रीड करो, फैन का स्पीड इतना कंट्रोल करो एंड देन ऑफ। सो क्या होगा, आर्डिनो पहले 1 सेकंड के लिए वो रीड करेगा टेम्परेचर, एक बार फैन का कंट्रोल स्पीड कंट्रोल कर देगा एंड देन बंद हो जाएगा, तो मुझे बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा आर्डिनो को, राइट, ये सब करने के लिए। सो वही चीज़ के लिए हम लोग जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में, जो कि होता है सिर्फ एक मेन मॉड्यूल होता है एंड ऊपर हम लोग वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, इस स्ट्रक्चर को छोड़ के हम लोग के पास नया स्ट्रक्चर है विच इज़ वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। इस वॉइड सेटअप जो होता है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है एंड वॉइड लूप के अंदर जो कोड होता है वो रेगुलरली बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है, बिकॉज अनलाइक नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट नहीं मिलता, कोड एग्जीक्यूट होते होते हमें इनपुट एंड आउटपुट बोथ रीड एंड राइट रियल टाइम में करना रहता है, ओके। तो दैट्स वाई all of the code we want to repeat again and again, we write inside the void loop, and all of the code we want to run once, we write that inside the void setup. अब ये कौन सा कोड है void setup में? void setup में मोस्टली कोड आता है कुछ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन which says pin mode LED pin output, ठीक है। अब I hope that all of you know variables, okay. Before taking this lecture you should have a basic knowledge of C coding, okay. सो LED पिन जो वेरिएबल ऊपर डिफाइंड है, इंट LED पिन इज इक्वल्स टू 7, मीन्स LED पिन इज़ अ वेरिएबल, इज़ अ इंटीजर वेरिएबल हुज वैल्यू इज 7। सो मैंने क्या लिखा है, पिन मोड 7 कॉमा आउटपुट। ये दिस इज द कमांड टू टेल आर्डिनो दैट आई एम यूजिंग पिन 7 एज एन आउटपुट। अभी जस्ट मैंने बताया था कि पिन 7 जो है वो इनपुट की तरह भी यूज़ हो सकता है एंड आउटपुट की तरह भी यूज़ हो सकता है, right? So we have to tell Arduino that what we are using that pin for, right? Similarly pin 11 जो है वो भी इनपुट एंड आउटपुट दोनों की तरह यूज़ हो सकता है, बट आउटपुट में वो दो तरीके से यूज़ हो सकता है, एनालॉग आउटपुट एंड डिजिटल आउटपुट। सो ये दोनों हम लोग को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर बोथ ऑफ देम आउटपुट इज़ फाइन। सो वी हैव टू मैक्रोज, इनपुट एंड आउटपुट, ऑल इन कैप्स। तो अगर हमें पिन को इनपुट रखना है तो यहाँ पे हम लोग इनपुट लिखेंगे, अब यहाँ पे आउटपुट रखना था तो हम लोगों ने आउटपुट लिखा। Why do we need to use these variables? I could have just written 7 here. The reason for using variables is very simple, okay. Suppose if I want to use a line digitalWrite, okay, or if I want to control that pin number 7 25 times in the circuit, and for some reason later I decide that I don't want to use pin 7, I want to use pin 8. What I have to do, I have to find all the lines in the code which says pin 7 7 7 7 7 7 7 and change them into 8. बट अगर मैंने LED पिन वेरिएबल यूज़ किया हुआ है तो अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट कम हियर, आई जस्ट बैक स्पेस एंड 8 एंड डन, राइट। सो दैट मेक्स आवर कोड मोर रीडेबल, मोर कस्टमाइजेबल and also easy to understand. Similarly, I have also defined one more variable here is DL, okay, which is for delay, and I have given it value 100. Now let's go to the next section which is the void loop. Inside the void loop हमने क्या लिखा है, digitalWrite LED pin 1. Now this is the first command, okay. We can see that Arduino का एक तरीका है लिखने का, that पिन मोड में भी था वो कि पिन स्मॉल केस में है, M कैपिटल में है एंड ODE स्मॉल केस में है। Similarly digital is small case, W is capital and then RIT is small case. So Arduino में most of the commands are like this only, ठीक है।
जिसमें अगर 2 वर्ड के कमांड है तो स्टार्टिंग वाला लेटर पूरा स्मॉल केस रहेगा, सेकेंड लेटर का जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स में रहेगा, एंड अदर्स आर इन स्मॉल केस टू डिफरेंशिएट एंड मेक इट मोर रीडेबल। डिजिटल राइट मतलब giving digital output which is 0 or 1. Inside, in place of those 0 and 1, we can also write in all caps high and low like this. HIGH, high, like this. Okay, but it is more convenient and more fast to write 1 or 0, right? Then I have given a command saying delay, and inside that I have given value DL, which means 100. So why do we need to give this delay? Why? See, Arduino has a 16 megahertz crystal. 16 megahertz means 1 megahertz means a time period of 1 microsecond. 16 megahertz means 16 times more. Okay, 16 times less the time period becomes. So Arduino can run through this code, thousands of times in a single second. That means the LED will switch on and switch off thousands of times in a single second. So we will not be able to see that it is blinking. That's why we need to give delay, so that telling Arduino switch on the LED, then wait for 100 milliseconds. Then 100 milliseconds means what? 1/10 of a second. Okay, 1 millisecond is 1000 millisecond is 1 second. So then digital write 0 means switch on the LED, wait for 100 milliseconds, switch off the LED, and then again wait for 100 milliseconds. Why? Because if switch off the LED and then switch on again, so what will happen? LED will be on only. Okay, we will not see it switching off. Okay, that's why we have to give 2 delays. Now let's run the code quickly and see whether it's working or not. See, you can see a fast blinking LED. Okay, approximately blinking 5 times in a second, right? So because the time period is 200 milliseconds, 100, so that's why it's blinking 5 times a second. And okay, so this was all about the digital write. Okay, now we will try to do digital read, and for that we would use a push button. Okay, we would use a push button, we would keep it here. Now this push button is what? Okay, this push button connects these two terminals, 1A and 1B. Okay, these are internally connected. 2A and 2B, these are internally connected. ये अंदर से connected है, shorted है. Okay, जब मैं इसके क्लिक करूँगा सिमुलेशन स्टार्ट करने के बाद, तब ये 1A and 1B, ये 1A वाली जो लाइन है एंड ये 2A वाली जो लाइन, 2 वाली जो लाइन है, 1 वाली 2 वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. ओके, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. सो हमें ये रीड करना है, राइट? So I have a technique which is called, okay, adding a pull up resistor. And how does it work? Let's see. So if I take this resistor and keep it 10 kilo ohms, and if I attach this resistor to 5 volt, using this 5 volt pin and using the 3.3 volt pin, you can actually take 5 volt and 3.3 volts. Okay, you can also power Arduino from this in real life, but you don't need to power Arduino in this simulation because it is already getting powered by the USB cable. Then connecting this here. Okay, so now I have connected, see, I have connected one resistor to the 5 volt. तो मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा. अब अगर मैं ये एंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर दूँ, तो क्या होगा बताओ? ओके, ये एंड को मैंने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया एंड ये एंड मैंने लिया एंड मुझे इसको पिन नंबर 12 में कनेक्ट कर दिया. नाउ किया क्या है मैंने यहाँ पे? First, I would like to remind कि ये 1A and 1A and 1B are internally connected. तो ये सिंगल है, ये सिंगल टर्मिनल है इनसाइड अंदर से. ये 2B and 2A are also internally connected. तो ये भी सिंगल टर्मिनल है. तो मैंने जो 1 टर्मिनल है उसको मैंने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जो 5 वोल्ट से कनेक्टेड है. ओके, एंड जो सेकेंड टर्मिनल है उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. जो सेकेंड वाला टर्मिनल है उसको मैंने डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया.
अब होगा क्या, ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, ओके, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, राइट, यहाँ पे 5 वोल्ट होने वाला है, बिकॉज इट्स एन ओपन सर्किट, अगर स्विच पुश बटन प्रेस नहीं है तो यहाँ से जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे भी होगा, 1 बी में जो वोल्टेज होगा या 1 ए में भी होगा। तो 1 ए से मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है पिन 12 को। बेसिकली जब स्विच जो पुश बटन है वो प्रेस नहीं है, ओके, विच इट इज़ नॉट येट प्रेस्ड, तो वैल्यू क्या आ रही है, 12 को कितने वोल्ट जा रहे हैं, 12 को जा रहे हैं 5 वोल्ट, राइट। आई विल रिपीट अगेन, जब स्विच ओपन है तो 12 पिन नंबर 12 को कितने वोल्ट जा रहे हैं, 5 वोल्ट्स। एंड जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा क्या होगा, ठीक है, स्विच को क्लोज करूँगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ग्राउंड तक, तो ये करंट फ्लो होने लगेगा एंड द 5 वोल्ट विल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर एंड पिन 12 विल गेट 0 वोल्ट्स। अंडरस्टूड। इस सर्किट में एक ये जो क्लोज सर्किट है 5 वोल्ट से लेकर ग्राउंड तक, इसमें एक ही रजिस्टर है, तो जितना भी वोल्टेज होगा इसके क्रॉस ही ड्रॉप होगा, राइट। सो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा वैसे ही ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो है ये इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा एंड आई विल रीड व्हाट 0 वोल्ट फ्रॉम पिन नंबर 12, ठीक है। सो दिस वाज अ सर्किट, दिस इज द हार्डवेयर। नाउ इन सॉफ्टवेयर व्हाट वी हैव टू डू, you have to again make a variable int sw pin and we have to give it value 12. Then we have to come here at white setup, pin mode sw pin input, okay. Although by default every pin has configured as input only, every digital GPIO pin, but still I like to do this, okay, just to be sure. And I have to read, so let's remove this, so LED won't be blinking now. So I will make a single simple empty variable int val, then val is equals to digital read, then sw pin, okay. Now where would I print this value, I will be able to read this value, that is correct, but where should I print it, okay. So in order to do that, Arduino has given us something called a serial monitor. Below you can see here, right, see, serial monitor. If I click it, it will show a output window, okay, or a blank, it is right now blank. We also have a serial plotter. So in order to use this serial monitor, we have to first initialize it. I told you, right, all the initialization and all the starting of anything is done in the white setup. So we will write as capital serial dot begin, and then we will give the baud rate. Baud rate means how many bits per second the data will be transmitted. Because this serial dot begin uses UART transmission, I will not go into detail. It is called serial transmission. It transmit whatever output Arduino is giving in, like suppose here I am printing the value of val, so it will be giving 0 or 1, right. So it will, the ASCII value of 0, the letter 0, it will provide an 8-bit value. Letter 0 has an ASCII value of 8-bit. It will pass that 8-bit value one by one and the character will be printed in the serial monitor, okay. That's what serial communication is. So I will give 9600 baud rate, okay, and then I will use here serial dot print ln. Now print ln means print whatever is coming and then go to the next line. Serial print val, then again I have to give delay because as I said Arduino runs through the code thousands of times in a second, so it will print 1000 values in 1 second and it will overwhelm our serial monitor. So I will give a 500 millisecond delay, or I will give DL only, okay, and I will change the value of DL as 500,
Okay, so this is all for the code. Now let's see whether we have made any mistakes or not. Okay, so no mistakes. See, right now I'm getting 1. Let me close the serial plotter. See, right now I'm getting 1. See, I'm getting 1. When I press this switch, see, I'm getting 0. When I remove, again I'm getting 1. Okay, so basically I'm able to read whether the switch is pressed or not pressed using digital read command. Understood? So we are done with the digital write, we are done with the digital read. Okay, it's already been a 25 minutes video, so we will do digit analog read and analog write in the next video. We'll also learn about something called a potential divider circuit and variable resistor. Okay, because we need to use that knowledge into making our robot car, which was the aim for this Arduino course. Okay, so I hope you have enjoyed this lecture. Okay, I hope you have enjoyed this video and you have understood what Arduino is. Okay, those of you who know what Arduino is, I know it might be a bit boring for you. Okay, it might be so much beginner for you, but just hold on. Okay, after 2-3 lectures, okay, we will be matching up to the difficulties. Okay, it will be going it is going to be much more difficult than this. Okay, and those of you are new to this, okay, don't be afraid. Okay, just learn Arduino, practice this. Okay, practice this command, do more things, attach more LEDs, attach more switches, use the switch to control the LED, anything like that. Okay, keep tinkering. Okay, that's why it's called TinkerCAD. Okay, so keep tinkering, keep learning. Okay, be curious, and thank you guys. So happy learning. Thank you.